Hello friends, I am Professor Dr. K.N. Kaul and I extend a very hearty welcome to all of you in this world of chemistry. आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये केमिस्ट्री के वर्ल्ड में हम कहाँ हमें बुलाया जा रहा है. अगर आप देखें तो नेचर में जो कुछ भी है वो केमिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमता है और हमारे ह्यूमन सिस्टम में हम जो सोचते हैं, हम जो बात करते हैं या हमारे दिल में जो कोई फीलिंग आती है, दैट आल्सो इज़ बेस्ड अपॉन केमिस्ट्री. केमिकल चेंजेस ही होते हैं. तो आज हम केमिस्ट्री के बड़े प्रिमिटिव और बेसिक टॉपिक से बात कर रहे हैं, जो कि देखने में तो बेसिक है लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जो भी बच्चा जब केमिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करता है तो उसको इन चीज़ों की बारीकियों का पता होना चाहिए, बेसिक्स का पता होना चाहिए. मैं आज लैब के बेसिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा और लैब के बेसिक्स में भी एक छोटा सा टॉपिक, बट अगेन आई स्ट्रेस दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस. उसके बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं. अब आप पूछेंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना. जब भी बच्चा स्कूल में आता है तो ज़्यादा उसकी अटेंशन जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे होती है और टीचर्स की भी ज़्यादा जो कह लो कि इंक्लिनेशन है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर ही होती है. और उसी चक्कर में थ्योरी को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के चक्कर में वो जो लैब का काम है, जो कि बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, वो मिस हो जाता है. जब भी बच्चा 11th-12th में आता है या 11th-12th करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है तो ये बेसिक स्किल्स जो हैं लैब की वो उसको नहीं आती होती. अब NEP का सिलेबस जो है वो सभी स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी लागू हो गया है. तो उसमें ये सोचा जाता है या ये एज्यूम किया जाता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं और ये समझा जाता है कि आपको ये अच्छी तरह से शॉर्ट टाइम में आ जाएंगे. लेकिन जब तक बेसिक स्किल आपके पास नहीं है तब तक वो आगे फिर चल नहीं सकता. मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी बच्चे आते हैं तो उनको एनालिसिस कैसे करना है ये तो बात छोड़ो, उनको ये भी नहीं पता होता कि एसिड रेडिकल्स या बेसिक रेडिकल या सॉल्ट है क्या चीज़. तो इसलिए मैंने ये सोचा कि केमिस्ट्री में अगर लैब के स्किल के बारे में सोचना है तो सॉल्ट एनालिसिस की बात करें. नाउ we come to the topic salt analysis. You know, as the name suggests, salt. ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. और सॉल्ट एनालिसिस एज सच का एक छोटा हिस्सा है. क्योंकि एनालिसिस का मतलब ये है कि कोई भी आपको चीज़ अगर दी हुई है तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं उसको आपने पता करना है. And in chemistry, the substances which we come across are either organic compounds or inorganic compounds. So analysis may involve the analysis of inorganic compounds as well as organic compounds. Moreover, two basic types of analysis. One is qualitative analysis, the other is quantitative analysis. As the name suggests, qualitative analysis means in which we are to study the properties of the substances, and quantitative in which we are to measure the quantities. And the salt analysis is a part of qualitative analysis in which we are to study the quality of the substance. Organic analysis is also a part of qualitative analysis where we study the composition of the substance in terms of elements, then functional groups present in that. And in case of salt analysis, we study inorganic compounds, that what are the components of a given salt. Now, question arises that what is a salt? You know, you have studied some substances are acids, some substances are bases, and some substances are salts. And salt is formed by the combination of an acid and a base. If we take the example of a simplest salt, let us say this is sodium chloride, that is NaCl. This is the salt.
Now, as I suggested, as I told, that a salt is formed by the combination of an acid and a base. In case of sodium chloride, it is formed by the combination of NaOH and HCl. NaOH is sodium hydroxide, it is a base. And HCl is hydrochloric acid, it is an acid. When acid and base combine with each other, they form salt plus water. Now, our aim is to see the composition of the salt. As I told that a salt is formed by the combination of an acid and a base, it means some part of the salt comes from acid, some part of the salt comes from base. If we analyze sodium chloride, it has got two parts. And salts are ionic substances. That is, they are made up of ions. Ions are an atom or a group of atoms which bears a charge. If the charge is positive, then it is known as a cation, and if charge is negative, then it is known as anion. So, in sodium chloride, we have got Na positive and Cl negative. This is a cation, and this is an anion. Now, these ions are also known as, they have another name which is known as radical. Radical again is an atom of group of atoms which bears a charge. So, this cation comes from base, so this is also known as basic radical. Basic radical. And anion comes from an acid, so it is known as acid radical. So, in our salt analysis, we are supposed to find out the acid radicals or anions and basic radicals or the cations in a given salt or a mixture of salts. The simplest salt analysis involves, which students might be doing in 11th class or maybe a little earlier, that a salt is made up of two ions, simple salt, a cation and an anion, and aim is to find out which cation and which anion is present in the salt. However, when we go a little further advanced, then there are four radicals. That is, two acid radicals and two basic radicals. When we do the salt analysis, we do not find the composition of the salts. That is, suppose we have got a mixture of sodium chloride plus potassium sulfate. We don't determine the presence of sodium chloride and potassium sulfate. We determine the presence of acid radicals and basic radicals. So in this case, this mixture of salts will contain four radicals. One is chloride, another is sulfate. Both these ions are acid radicals or anions, whereas sodium and potassium, these are basic radicals. So we are to analyze the given salt, and ultimately our result will be to inform that these acid and basic radicals are present in the given salt. Dear students, in my lecture series on salt analysis, in the first lecture, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक सॉल्ट क्या चीज़ है. फ्रेंड्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की डिटेल को अच्छी तरह से समझने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि बेसिक लैब स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाए. और यही कारण है कि मैंने सॉल्ट एनालिसिस जैसे एक बड़े फंडामेंटल पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का चॉइस मैंने की, जो आपके साथ डिस्कशन के लिए चुना. Now I discussed with you what basically a salt is and what we are expected to do to analyze a salt. In the coming lectures, we shall learn more about the details of the procedures followed for the analysis of a salt mixture. Thank you.